Hello, dear viewers and learners. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. Chapter Financial Management. Topic Dividend Decision. हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है कि जो फाइनेंस मैनेजर है उसे 3 मेजर फाइनेंस डिसीशंस लेने होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है और उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हियर आई हैव शोन द होल थिंग इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन शेयर होल्डर एंड द फाइनेंस मैनेजर। कई बार हम कुछ अलग ढंग से क्रिएटिव मैनर में जब याद करते हैं तो ये फैक्टर्स हमें समझने में भी आसान होते हैं और एग्ज़ाम पर्पस के लिए मेमोरी में रखने के लिए, याद रखने के लिए भी यूज़फुल होते हैं। So let us see the conversation. Hear the conversation between the shareholder and the finance manager. Shareholder: what exactly is dividend decision? Finance manager: well, it means distribution of surplus profit as dividends to you, dear shareholders, and also to keep retained earnings for reinvestment to meet the future needs. सो जो भी सरप्लस प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट के रूप में देने के बाद या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो भी बचता है उसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में देना और कुछ हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखना, यही है डिविडेंड डिसीजन। Then the next question from shareholder is, may I know what factors affect your this decision? Yes, of course, are residual owners. So why we are calling residual owner to the shareholder? The same reason which I gave you in the previous uh, word from finance manager, that जैसे सारे डिवेंचर होल्डर्स या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनसे लोन लिया है कंपनी ने, उनको इंटरेस्ट पे करने के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड देने के बाद जो भी कुछ बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज रेसिडुअल ओनर्स। देर आर मेनी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिविडेंड डिसीजन। लेट मी फर्स्ट टॉक ऑफ कंपनीज अर्निंग्स। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अर्निंग्स, उसकी अमाउंट एंड स्टेबिलिटी बोथ। द अर्निंग्स इफ दे आर हाई, कंपनी कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड. So the shareholder wants to know, oh, that is the earnings affect the dividend decision. Let me understand. Oh, I see. Please explain, how do earnings affect my dividend rate? So the earnings, if they are high, company can declare higher dividend. Simultaneously, stable earnings year after year also ensures your higher dividend rate. But the investor or the shareholder is curious to know, but why can't I get higher dividend even when earnings may not be stable, but the bumper profits are there during a particular year? So the finance manager replies, our dear shareholder, you expect stable rate of dividend year, yes, right? Minor or temporary change in current year's earning may not ensure you stability of dividends. मतलब किसी साल में आपको कम अर्निंग है और किसी साल में ज़्यादा अर्निंग है, तो उसके साथ अगर हम डिविडेंड को फ्लक्चुएट करेंगे, सो दैट विल नॉट बी expected or that will not be favorable from the viewpoint of the shareholder also. Now this stability of dividend actually has a favorable impact on the market value of shares. तो कंपनी जो है जब डिविडेंड को स्टेबल रेट पे देने से पहले ये इंश्योर करेगी कि उसका अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है एक साल कम एक साल ज़्यादा नहीं, वो स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि दे कैन मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रेट.
And that is why board of directors declare increase in dividend only when they are confident about higher earning potential of the company in future too. So after this, the question which arises from shareholder is that your company is a new and upcoming one. Then what impact it will have on my dividends? The finance manager says, being new in the market, our company has huge growth opportunities and future growth plans, which needs retaining large part of funds for reinvestment. And that means lower dividend for you, क्योंकि वही प्रॉफिट हमें एक तरफ आपको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है और दूसरी तरफ हमें रिटेन अर्निंग में रखना है. तो अगर हम रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेंगे तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा. बट एज द कंपनी विल ग्रो मैच्योर, दैट मीन्स कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ उसकी होती जाएगी, यू विल सर्टेनली रिसीव हायर डिविडेंड्स, because after a certain limit the company will have no more growth prospects or opportunities available. In that case they can distribute more as dividend and they do not have to keep the retained earning into that extent. Then next he says that moreover our company does not have easy access to capital market to raise funds. अब क्योंकि कंपनी नई है तो इस कारण जो कंपनी है वो अपने फंड्स रेज करने के लिए बार बार और इजीली कैपिटल मार्केट नहीं जा सकती. दैट इज़ वाई इट हैज़ टू डिपेंड मोर ऑन रिटेन अर्निंग्स विच मीन्स लोअर डिविडेंड. सॉरी फॉर यू डियर शेयर होल्डर. तो जब कंपनी के पास फंड्स रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट की तरफ एक्सेस नहीं है, then they have to depend obviously on their retained earning. So that is why the shareholder have to compromise with the lower dividend. Then next the shareholder expresses his joy. I am so happy to receive dividends as tax-free return or income on my investment in shares, because you know that dividends are tax-free in the hands of the shareholder. But here you see the other aspect of this coin. The finance manager says, yeah, but the company has to pay taxes on the share of profits distributed as dividends. So taxation policy has an impact on dividend rate inversely. Higher the tax rate is, lower the dividend rate will be. क्योंकि कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है उन डिविडेंड्स पे, तो कंपनी के टैक्सेशन जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है उसके ऊपर कंपनी का डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करेगा. अगर टैक्सेस हाई है डिविडेंड पे तो कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी. अगर टैक्सेस कम है तो कंपनी कैन डिसाइड फॉर गोइंग हायर, डिक्लेयरिंग हायर डिविडेंड रेट. Let me also tell you how cash flow position affects dividend rate. The next factor is cash flow position. A company may be earning huge profits but may be short on cash. It shows that the company has profitability but not liquidity. लेकिन अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड, then they will have to pay cash or check to the shareholders. So if the company does not have liquidity, they are short on cash, then company cannot, it is not in a position to declare higher dividends. So that is also one factor. Then by the way, as a shareholder, what will be your preference? Now the finance manager asks the investor, the shareholder, that what is your preference? Do you expect higher dividend now or you are ready to forego the dividend now for the future gains? The investor or the shareholder says, I am a middle class retired investor and expect higher or stable dividend rate as a regular income. In that case, company has to satisfy their shareholders who are not so rich or young by keeping less retained earning. मतलब ये है
कि अगर इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स यंग एंड रिच है, देन दे डू नॉट एक्सपेक्ट द रेगुलर और स्टेबल इनकम. तो इस केस में कंपनी कैन कीप मोर रिटेन अर्निंग and can distribute less of dividend. But when the investors or shareholders are from middle class or retired investors, then the company has to distribute more dividend, has to declare higher dividend because they are expecting it as a regular income. The next question from the shareholder: how does the bullish phase in stock market help in deciding dividend policy? Stock market reactions affect dividend rate greatly. Company has to keep in mind that increasing dividend is a good news for investors and hence increase stock prices. That shows bullish phase, while company has to get ready or prepare for the negative impact also, bearish phase on decreasing the dividend. So while deciding about the dividend, the company has to keep in mind both the sides. If they are going to raise the dividend rate, the it will have the impact on its share prices, that it will go high. But if they decrease it, then stock market reaction will be not favorable for them. It will have negative impact on their share prices. Now, are there any laws or regulations also affecting dividend decision? This is the question from shareholder. The finance manager answers, yes, Companies Act has certain provisions regarding payment of dividends. Moreover, there are companies' internal provisions which put limits or restrictions on its dividend distribution capacity. And these restrictions are known as legal restrictions. Apart from the above, there are certain contractual constraints also, which are put forward by the lender on company when the company borrows funds from them, and companies are required to strictly abide by to follow the terms of loan agreement with the creditors, and they cannot in any case violate these terms to declare higher dividend in favor of the dividend holders or the shareholders. मतलब कंपनी को एक तो लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोविजंस और दूसरे जो उनके क्रेडिटर्स ने लोन एग्रीमेंट में टर्म्स रखी हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड डिसीजन लेना है. Then the shareholder says, thank you so much, sir, for making me aware. Welcome, Mr. Shareholder. It's my pleasure. After all, as finance manager, it's our objective to maximize shareholders' wealth. So with that, we end today's lesson. In the next video, I would share with you some tips to be successful in examination, as your examination is approaching fast, how to prepare for it and how to get through it successfully. Thank you all. Keep watching. Happy learning.